Yes, Sarah. I'll keep this brief. This is an excellent session. Just wanted to add that for postural Hello. hypertension, accelerated hypertension, I feel these conditions are very multifactorial. Yeah. So I mean, there's usually one dominant problem like increasing thiazide or something like that. But I think a very thorough history needs to be taken as well, such as recent increases or decreases in salt intake, or recent weight loss or weight gain. So we need to ask those as well, and especially recent addition of medications. For example, patients have cataract surgery and they are advised acetazolamide drops. So sometimes, or they have been started on alpha blockers for BPH. So I think history plays a huge role in defining the problems that are adding to the problem. And finally, comorbid conditions such as obesity and OSA also need to be thought about. I agree. Dr. Shabazz. I think if you want to unmask hypertension, Sir, can you apart please from- speak loudly? जब भी बिलाल बात करते हैं तो हम सुनते हैं, तो मैंने सर भी- डॉक्टर शहबाज बात कर रहे हैं हाँ। ना, इसके बाद आप कर लीजिएगा. चले ठीक है. apart from doing an ambulatory blood pressure monitoring, I think what you can do is a home blood pressure monitoring. That is very important. And the other thing is you put this patient on a treadmill and see what happens to the blood pressure. That's Bilal sir. And if the blood pressure goes up, then you, Yes. that is what सर मैं भी थोड़ा सा फारूक लाइट साहब बिल्कुल सर. लाइट क्वेश्चन करूं. जी जी बिल्कुल. अगर एक आदमी की 2 बीवी हैं तो वो क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करे? ये 2 बीवी वाले जवाब दे सकते हैं. नहीं तो आप- इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है, तीसरी कर लो. तीसरी फिर देखो कर लो. तुम्हारे साथ क्या होता है. नाइस. अच्छा फारूक last- साहब just last- the last last comment. comment I want to make very सर एक well सर, dis- सर डॉक्टर हारून प्लीज. जी सर. बड़ी अच्छी बड़ी बातें मैंने सुनी है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कंसल्टेंट्स के प्राइवेट क्लिनिक्स में ब्लड प्रेशर कौन चेक करता है? हु इज अ नॉन मेडिकल पर्सनल, उनका पीए अक्सर वो बिल्कुल. जो लिख के दे देता है वो समझते हैं यही सही है. बीपी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद देखें, बिल्कुल. बिकॉज इट्स अ करेंसी इन देयर हैंड्स Agree. एंड दे नो हाउ टू स्पेंड इट, एग्री. whether it is a heart failure patient or hypertensive patient or whatever. ओके ओके सर. Thank you. लेकिन अगर ब्लड प्रेशर डॉक्टर देखता है तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, तो उसको कौन देखेगा? सही. अच्छा very डॉक्टर- well डॉक्टर described. तारिक अब्बास सर, बस फाइनल ये लेके फिर हम पैनल के पास आ जाए. Tariq Wasim. तारिक वसीम साहब, सॉरी. Right. No, just. इतने तारिक हो गए कि What about those who have a clear-cut evidence of a target organ damage, and yet their blood pressure is normal? normal. Maybe other It reasons. is not But normal. let's see. It is not normal if you go for ambulatory blood pressure Yes, You monitoring. may found there. You Yes, will so you have find to the real probably- cause. And number one. Number two, it is very important to individualize the patient. What we have Agree. seen is It's not just single. that for some patients, a BP of 120/80 may be high blood pressure. And Agree. for other patients, it may be a normal blood pressure. Agree. And for some patients, a blood pressure of 100/60 may be an ideal blood pressure. So you have to individualize such patients, number one. Number two, what I wanted to slightly stress the fact about masked hypertension. Professor Bilal has described it very well. But I would like to stress this point. This masked hypertension is not a benign phenomenon. And people with masked hypertension, they may go on to have cardiovascular and cerebrovascular complications. So you have to take them seriously. Thank you very much. I think we are just coming to conclude. Just last comment. Yeah. What the question is that what about the target organ damage when the blood pressure is normal? So it has been seen that there is a significant variability of blood pressure. And one of the important cause of target organ damage is variability. And there was an article in the JACC that there is a systolic variability within the norms. I mean, in the morning it is under 10/70, and in the evening it is less than 130/85. That is one of the important cause of target organ damage in normal blood pressure. Yes, it may be say as a mass kind of hypertension. Sir, please, sir. Just concluding, I'm really thankful to Dr. Ijaz want to say something. यहाँ वालों को थोड़ा सा हक है. अच्छा, ये देखा है कि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि लोगों के पास जो डिवाइस होती है डिजिटल, वो अक्सर रीडिंग गलत देती हैं.
तो अच्छा जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना, जो अगर पेशेंट ने घर पे अपनी रीडिंग रखी है तो जब तक वो कैलिब्रेटेड ना हो, अच्छी क्वालिटी का ना हो, उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो है ना, अगर किसी का एक साइड पे ब्लड प्रेशर कम है तो कई दफ़ा हमने देखा है दूसरी साइड पे ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो उसमें दूसरी साइड पे उसको चेक करना चाहिए। It's also indicated in the जी, latest guidelines. जी, Check जी, blood जी। pressure in both arms अच्छा, और and तीसरी- orthostatic, जी, जी, these two बिल्कुल। things. और तीसरी बात यह है कि जो कर्नल साहब ने बात की है वो 100% दुरुस्त है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ब्लड प्रेशर अच्छा चेक नहीं करते हैं, बिल्कुल। इन माई क्लिनिक आई चेक ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल माई पेशेंट माई सेल्फ, और आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनी अदर पैरामेडिकल। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, एक हम पेशेंट की इधर रीनल आर्टरी उसकी स्टेंटिंग कर रहे थे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए, उसका ब्लड प्रेशर था 250/140। तो मैंने उसको अपने जूनियर को कहा, मैंने कहा इसके चेक करो रिकॉर्ड में कितना लिखा हुआ है स्टाफ ने, उसने 140/90 लिखा। वो हमेशा रूटीन ही चल रहा है। वो रूटीन चल रहा था। Thank तो you, उसका sir. था ऑन मतलब कैश लैब में 250/140 था। तो ये दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। इस वजह से डॉक्टर को खुद ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और जब भी मतलब कोई ऐसी क्यूरी चीज़ हो तो दोनों साइड पे चेक करना चाहिए, और डिजिटल डिवाइस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। Thank you, sir. Thank you very much for to all the अच्छा, experts, फारूक to साहब, audience, एक मिनट, especially. the latest thing is that ask the patient Sir, मेरा BP check बढ़ रहा his है। blood pressure himself at his home. ये एक जो लेटेस्ट उन्होंने कहा है कि अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के खुद चेक करे, चाहे वो डिजिटल से करता है चाहे जिस तरह करता है। दैट इज द बेस्ट रीडिंग्स अपार्ट फ्रॉम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। ये अब किसी ने सायरन ही बजाना शुरू कर दिया कि बंद करें। अच्छा, with that I thank all the panelists and especially the organizers, because this session was orchestrated like one and a half month back. They coordinated, they really distributed these PowerPoint slides to all the experts, and behind that I think is Professor Dr. Qasim. He is SR at Chaudhry Parvez Institute. A round of applause, because it went very well. We have learned a lot from this whole session. It's very well designed, and it's all his effort behind that. I'm just presenting, and certainly he is under Professor Kashif Hashmi, so it's very well went session. I was also a bit confused whether we going to complete it within time or not. इतने बड़े-बड़े लोगों को संभालना आसान नहीं है. So I'm thank you all the experts and the audience as well for their input as well. With that we conclude the session, and let's move on to the next session. Thank you very much.